फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इस बिस्किट के इस तरह से बॉल्स बना लिए हैं। इसको अब हम सेट करने के लिए रख देंगे। तो ये जो मोल्ड है तो इससे हम कुछ डिज़ाइन बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट ली है और इसको थोड़ा सा घी लगा लिया है। और ये जो हमारा डो है तो मैं इसमें फैला दूँगी इस तरह से। और बिस्किट के जो पाउडर है, जो डो है, इसको हमने इस तरह से प्लेट में फैला दिया है। तो अब हम इस मोल्ड से इसकी कुछ डिज़ाइन बना लेंगे। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सुंदर डिज़ाइन बन चुकी है। तो मैं इसी में इसको ऐड करती हूँ। तो फ्रेंड्स इस डो के हमने इस तरह से कुछ बॉल्स और ये जो मोल्ड थे उससे हमने इसके इस तरह से डेकोरेशन किया है। तो इसके ऊपर हम और कुछ काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है ये चॉकलेट सिरप। चाहे तो आप जो डार्क चॉकलेट आता है उसको भी आप मेल्ट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से या चाहे तो आप इसको इस तरह से इसमें डुबाकर भी ऐड कर सकते हैं इस तरह से। तो दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत दिखता है ये। तो सारे ये जो बॉल्स है इसको मैं इस चॉकलेट सिरप में डुबाकर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इस सारे बॉल्स को और जो मोल्ड में से हमने जो डिज़ाइन की है उसको मैंने चॉकलेट सिरप से निकाले हैं। तो इसको मैं और थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास है कुछ सिल्वर बॉल्स। तो इससे मैं थोड़ा सा इसको गार्निशिंग करूँगी और उसके बाद हमें इसको फ्रिज में सेट करने के लिए रख देना है। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं इस जो बॉल्स है हमारे, इसका जो लुक है बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो इसके अलावा आप इसमें कोई भी डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिल्वर बॉल्स यूज़ किए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे जो सिल्वर बॉल्स है वो इसके ऊपर बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे बिस्किट के बॉल्स बिना बेक किए हुए तैयार हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो लुक है दिखने में बहुत ही सुंदर दिख रहा है। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ये रेसिपी अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स आपको एक बार फिर से मेरी तरफ से आने वाले साल के लिए बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। आप ऐसे ही हंसते रहिए, खुश रहिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट खाते रहिए और मेरे वीडियो ऐसे ही देखते रहिए। तब तक के लिए बाय, टेक।